हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे के आर मंगलम वर्ल्ड स्कूल गुरुग्राम का क्लास 6 सीबीएसई साइंस एग्जामिनेशन टर्म 2 2024। So let's start. Question one. So we have like in this we have got a total time of 3 hours. The general instructions are given that this paper consists of 39 questions in 5 sections. Total number of printed pages are 7. All questions are compulsory. Section A consists of 20 objective type questions carrying 1 mark each. Section B consists of 6 very short questions carrying 2 marks each, and section C consists of 7 short answer type questions carrying 3 marks each, while section D consists of 3 long answer type questions carrying 5 marks each. Section E consists of 3 of uh, 4 marks each with subparts. So, section A is question 1. Animals and plants have certain features which make them survive in a particular habitat. This is called as adaptation. अब adaptation होएगा क्योंकि adoption नहीं हो सकती, specification हो सकती, तो adaptation is more certain or specific in this. So question 2 is which is an terrestrial adaptation. तो A है हमारा streamlined body, B है gills, C hair on body, scales on body. So A, B, D are of fish habitat. So the answer is C, hair on body. Question 3 is the leaves of one of the following plants fold up on touching. This is mango plant, mustard plant, money plant, mimosa plant. So it should be mimosa plant because it is the touch me not, and it folds up when you touch it. So which of the following is correct for respiration in plants? So first option is respiration takes place only during daytime. Respiration takes place only during night time. Respiration takes place both during day and night. And D is respiration takes place only when plants are not making food. So the correct answer is C. Respiration takes both place both day and night. Uh, And question 5 is shadows are. So they have asked what are shadows. So they have told us the options like always smaller than the opaque object, always bigger than the opaque object, remains same size or as of the opaque object, can be smaller or bigger than the opaque object. So the answer is D, can be smaller or bigger than the opaque object. And which one the following is a luminous objects. So you may have heard that luminous objects are those which emit light of their own, which give light of their own. So in translucent sheet does not give, star gives. Let's see other options also. Book, moon does not give light of its own, so don't get confused, so it's star. Question 7. Light travels in circular line, straight line, perpendicular line, middle line. So it should be straight line. Light travels in straight line. An electronic device that easily breaks when excess current flows through the circuit. Electric bulb, filament, electric switch, fuse. So it should be a electric bulb. Don't get confused between electric bulb and filament because here they are asking for the electric device. Next question, question 9. The electric current in a closed circuit always flows from dash terminal to dash terminal of an electric cell. So first option here we have is negative to positive, B positive to negative, C negative to negative, D positive to positive. So it is B positive to negative. Bulb
glows when a or an dash is used in place of a switch. So a bulb can glow when a rubber band is placed. No. A matchstick. No. Aluminum foil. Yes, as it is a conductor, and a wooden block. No, because wooden matchsticks and rubber band are all insulators and do not let the current to flow through. So observe pictures A and B given in figure carefully. So here we are given some figures. So after that they have asked us which of the following statement is correct for the above given pictures. So we have is in A cars 1 and 2 will come closer. This is correct. Because unlike poles attract each other. And in B, cars 3 and 4 will come closer. No, so this can't be. B in A, cars 1 and 2 will move far away from each other, and in B, cars 3 and 4 will move away. This is also wrong. In A, cars 1 and 2 will move away, and in B, 3 and 4 will come closer to each other. This is also wrong. Then we have what we have is left D. In A, cars 1 and 2 will come closer to each other, and in B, 3 and 4 will move away from each other. So this is the correct answer. Question 12. A bar magnet is immersed in a heap of iron fillings and pulled out. The amount of iron fillings clinging to the so here are the options. North Pole is almost equal to South Pole. North Pole is much more than the South Pole. North Pole is much less than the South Pole. Magnet will be the same all along its length. So it is A. North Pole is almost equal to South Pole, as because both the poles will uh, get same amount of iron fillings to it. Question 13. North pole of a magnet can be identified by another magnet having its poles marked as North Pole and South Pole. Another magnet, no matter whether the poles are marked or not. And using an iron bar, using iron fillings. So it is uh, A option, another magnet having its poles marked as North Pole and South Pole. Next question we have is question 14. Which of the following component of air cannot be taken directly by plants? So oxygen, carbon dioxide, nitrogen, none of these. It will be nitrogen, as nitrogen is the component of air which cannot be taken directly by plants. So next, coming to question 15, which one of the following represents the correct order of abundance of various gases in the air? Nitrogen, then oxygen, then argon, then carbon dioxide. B. Nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon. C. Oxygen, nitrogen, carbon dioxide, argon. D. Carbon dioxide, nitrogen, oxygen, and argon. So here they are asking that what is the correct order of these correct order of abundance. So it should be A part nitrogen, then oxygen, argon, then carbon dioxide. Nitrogen is 78%, oxygen is 21%, argon is 0.34%, and carbon dioxide is only 0.33%, while others are other gases. So mostly children get confused between whether it will come in A or B, like here it is an A or B. So nitrogen, oxygen, then carbon dioxide, then argon. It should not be B, it will be A. Next, question 16. Bojo took an empty plastic bottle, turned it upside down, and dipped its mouth into a bucket filled with water. He then tilted the bottle slightly and made the following observations. So, first, he made the following observations. Bubbles of air come out from the bottle. Some water entered the bottle.
Nitrogen gas came out in the form of bubbles and oxygen got dissolved in water. No bubbles formed, only water entered the bottle. So they're asking which observations is or are correct. So A 1 and 2, B fourth only, C 3 and 4, D 1 only. So it will be A 1 and 2. Question 17. So here we have assertion and a reason. So assertion is to see a non-luminous object, a luminous object is required. Uh, and the reason is light from a luminous object falls on a non-luminous object and reaches our eyes. So A option is both A and R. And are true, and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, and R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. So it will be B. Both A and R are true, and R is not the correct explanation of A. Now coming to question 18, assertion. Electric bulb glows when the switch is turned on in an electric circuit. Reason is electric switch acts like a conductor in an electric circuit when it is in the on position. तो ये तो पता ही चल रहा है कि A है. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next we have is question 19, assertion A. The North Pole of an freely suspended magnet always points towards the geographical north. Reason, using pieces of iron we can make artificial magnets. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. B, A is true but R is false. D, A is false but R is true. It will be B option. Both A and R are true and R is not the correct explanation of A. So coming to question 20, carbon dioxide and oxygen are involved in respiration. Reason, plants and animals consume oxygen and give out carbon dioxide during respiration. Are plants or animals consume oxygen? No. So let's see the options. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true and uh, R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. And D, A is false but R is true. It will be C option. A is true but R is false. So, section B, question number 21, mention any two adaptation of animals living in mountain region. So, mountain region में जो animals रहते हैं जैसे कि goat, तो उनके जो hooves होते हैं वो ब्रॉड होते हैं सो दैट दे कैन क्लाइंब द माउंटेन्स इजीली. तो ऐसा ही आंसर आप लिख सकते हो. द क्वेश्चन नंबर 22 आता है हमारा स्टेट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन अ पिन होल कैमरा. सो एज वी नो कि पिन होल कैमरा में इरेक्ट और इन्वर्टेड वो बनती है इमेजेस बनती हैं. तो आप ये आंसर लिख सकते हो कि इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेजेस बनती हैं इसमें. देन इज question number 23. An electric bulb is connected to a cell through a switch as shown in the figure. When the switch is brought on position, the bulb does not glow. What could be the possible reason for it? Give mention any two of them. तो ये as आपको ये दिख रहा है कि एक सर्किट है, यहाँ पर एक बल्ब है, बहुत ब्लर सा दिख रहा है पर दिख रहा है, और यहाँ पर ये सेल है और यहाँ पे ये स्विच है. तो वी कैन से दैट कि या तो सर्किट इनकम्प्लीट है या फिर बल्ब फ्यूज हुआ है या फिर वायर लूजली वो
लूज वायर्स लगी हुई हैं, या फिर जो क्या बोलते हैं प्लस माइनस का जो ये साइन है इलेक्ट्रिक सेल में, उधर से गलत वायर्स अटैच की हुई हैं, so that can be the reason. Then coming to question number 24, Bojo dipped a bar magnet in a heap of iron fillings and pulled it out. He found that iron fillings got stuck to the magnet as shown in the figure. तो जैसे कि बताया हुआ है कि एक बार मैग्नेट में जब हम आयरन फिलिंग्स करते हैं तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो साइड में होता है उसके, नॉर्थ और साउथ पोल्स पे, दैन इन द मिडल, तो मिडल में कम रहता है, तो दैट इज वाई आयरन फिलिंग्स बीच में कम स्टिक करती हैं और साइड में ज्यादा। तो क्वेश्चन है विच रीजन्स ऑफ द मैग्नेट हैव मोर आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू देम, तो उसमें आप लिख सकते हो द पोल्स, द एक्सट्रीम पोल्स, ठीक है। सो एक्सट्रीम पोल्स इज द आंसर, और एक्सट्रीम पोल्स के साथ अब व्हाट आर दीज रीजन्स कॉल्ड, तो ये रीजन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के में कहलाया जाता है। Next question is, a toy car has a bar magnet laid hidden inside its body along its length. Using another magnet, how will you find out which pole of the magnet is facing the front of the car? So एज यू नो कि अगर बेसिकली इसके अंदर आपको बताना है कि वो मैग्नेट है कि नहीं है और कौन सा मैग्नेट है, तो जैसे कि हमें पता है कि नो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो हम जो मेथड यूज कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम एक और बार मैग्नेट ले आए और उस बार मैग्नेट में जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल प्रॉपरली आइडेंटिफाइड है, तो अगर हम उसका नॉर्थ पोल अगर फ्रंट से लगाएंगे और अगर वो अट्रैक्ट हो रहा होगा तो विच मीन्स कि उस टॉय कार का जो फ्रंट है वो साउथ है। सिमिलरली वाइसा वर्सा, and also you can also freely suspended भी कर सकते हो जिससे पता लगा सके कि, क्योंकि जो freely suspended magnet होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाता है, तो जोग्राफिकल नॉर्थ ही होती है वो, तो इसलिए वो नॉर्थ होगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेरी ब्रीफली। अ फिरकी डज नॉट रोटेट इन अ क्लोज्ड एरिया, तो फिरकी हमेशा मूविंग एरिया में, मूविंग एयर में रोटेट करती है, तो इसलिए ये ऑब्जर्वेशन है, ये रीजन है कि हमेशा फिरकी को मूविंग एयर में ही, अदरवाइज वो रोटेट नहीं करेगी, इसलिए लैक ऑफ एयर की वजह से वो रोटेट नहीं करेगी। Then empty glass in fact is not empty, so as you say कि air has some mass or air has some space, so air occupies space, इसका air की property होती है, तो उसी property को describe करते हुए हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि जो empty glass है अगर हम उसको उल्टा करके एक बकेट में डालेंगे, बकेट फुल ऑफ वाटर, तो वो इजीली जाएगा नहीं और एक्सर्ट करेगा प्रेशर, तो जब वो एयर में प्रेशर, एयर की वजह से एक्सर्ट करता है प्रेशर, तो वो धक्का देता है, धक्का देता है तो वो पानी उसमें जाता नहीं है, इसका मतलब कुछ तो उसके अंदर है जिसकी वजह से वो जा नहीं रहा है और एक्सर्ट कर रहा है अपने आप को, तो उसमें क्या अगर हम जरा सा भी टिल्ट करते हैं तो वो पानी बबल निकलने शुरू हो जाते हैं और पानी उसमें जाना शुरू कर देता है, that is how it makes room for the air, so that is the answer. Now coming to section C. सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, मेंशन एनी 3 अडाप्टेशन ऑफ फिश टू सर्वाइव इन द एक्वेटिक हैबिटेट, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है फिश की, गिल्स होते हैं उसके और स्केल्स होते हैं उसकी बॉडी पे, सो दैट उसकी मूवमेंट हो सके, तो दैट इज हर आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट ओपेक ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस बताने को बोल रहा है। ट्रांसपेरेंट तो पता है हमें, जैसे कि ग्लास होता है बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, विच मीन्स कि ऐसे मटेरियल जिनसे लाइट पास हो जाती है और हम देख पाते हैं क्लियरली। ट्रांसलूसेंट जैसे कि हमारा टिश्यू पेपर हो गया, टिश्यू पेपर से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत वेग सा दिखता है, हल्का ब्लर दिखता है, तो दैट इज द ट्रांसलूसेंट थिंग। ओपेक ऑब्जेक्ट इज समथिंग जो ब्लॉक कर दे और जो हमें सामने का देख ना पाए हम, वो होता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, व्हाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम, तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन हमेशा रबर ग्लव्स यूज करता है। रबर ग्लव से क्या होता है, दैट इज अ बैड कंडक्टर एंड इंसुलेटर होता है और इसलिए इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है इलेक्ट्रिशियन को, और क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो नहीं करता है, इस वजह से वो
वो यूज करता है अपनी सेफ्टी के लिए. क्वेश्चन नंबर 30. Paheli wanted to glow a torch bulb using a cell. She could not get connecting wires. Instead, she got two strips of aluminum foil. Which will she succeed? Yes, she will succeed because aluminum foil is a good conductor of electricity. और just like a good metal, ये aluminum foil will work like a wire. और इस ऐसे इसका जो सर्किट होगा वो complete हो जाएगा and the torch bulb will glow. Then question number 31, you are provided with two identical metal bars, one out of which is a magnet. Suggest ways to identify the magnet. अब दो मेटल मैग्नेट मिले हुए हैं जिसमें से एक मैग्नेट है. तो यहाँ पे हमें बेसिकली मैग्नेट की प्रॉपर्टीज बतानी है कि मैग्नेट अनलाइक पोल्स attract each other and like poles repel each other. So इसमें एक और चीज बता सकते हैं कि freely suspended जो magnet है वो north south direction में जाता है, geographical north में जाता है. And second thing is कि अगर वो magnet है तो magnet always attracts some magnetic metals जैसी चीजें अपने आप से attract करते हैं like iron fillings. So these are the some of the properties which you can elaborate in this question. Then question number 32, list any three precautions of safe storage of magnet. तो magnet की बात करी जाए तो इसको safely store करना चाहिए. wood रख के store कर सकते हैं या फिर it should not be kept near the computer hard disk so that उससे data erase हो जाता है. Then question number 33, how do plants and animals help each other in exchange of gases in the atmosphere. बड़ा important question है और ये आ गया है एग्जाम में. सॉरी, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं बिकॉज प्लांट्स और एनिमल्स जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. ह्यूमंस बीइंग्स और जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग एनिमल्स, दे take in oxygen and this is how the balance in the atmosphere is maintained. अगला क्वेश्चन है जो ऑप्शनल में था. पहेली kept some water in the beaker for heating. She observed that tiny bubbles appeared before the water started to boil. तो why did the tiny bubbles appear? तो tiny bubbles जो appear करते हैं वो basically जो air dissolve होती है water में उसको दिखाते हैं और वो छोटे छोटे bubbles होते हैं आपको बॉटल के अंदर भी दिख जाते हैं. Then is section D. Question number 34, you are given an iron strip. How will you make it into magnet? तो आपने मान लो ये आयरन स्ट्रिप है और आपने जो एक बार मैग्नेट लिया और उस बार मैग्नेट से आपने इसको थ्रो किया, एक दो एंड सो ऑन. यू करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो सो दैट ये मैग्नेट बन जाए और तब तक करते जाओगे जब तक ये मैग्नेट बन नहीं जाता है, अट्रैक्ट करने नहीं लगता है. सो आप भी कम से कम नहीं तो 35-40 टाइम्स करते हो. देन बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग्स टू इंडिकेट द पोल्स. हाउ विल यू फाइंड आउट विच पोल इज नॉट. सो ये क्वेश्चन भी काफी रिपीट नेचर में आया है इस बार एग्जाम में, क्योंकि इसमें भी हम यही बताएंगे कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. तो दैट इज हाउ यू विल फाइंड द नॉट. और ऑल्सो या फिर आपकी मार्किंग नहीं दे रखी है तो आप ये एक्टिविटी बता सकते हो कि आप अगर फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को, जैसे मान लो ये आपका वो है स्टैंड है और आप यहाँ पर एक थिन सी एक धागा लिया है और मैग्नेट हमें नहीं पता कि ये मैग्नेट में कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, तो जनरली जो ये गिर जाता है नीचे वो नॉर्थ की तरफ गिर जाता है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये गिरता है. तो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में गिरता है, यानी कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ होती है वो, तो जहां पे गिर रहा होगा वो नॉर्थ होगी. Then what is the question number 35, what is the purpose of using an electric switch. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इलेक्ट्रिक स्विच ऑन और ऑफ का काम करता है, ब्रेक और मेक द सर्किट होता है. सो सम ऑफ द गैजेट्स दैट हैव स्विच बिल्ट इनटू देम, तो जो इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स होते हैं जिसमें हमारे स्विच इनबिल्ट होता है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, गीजर जिसमें स्विच इनबिल्ट होता है. देन हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स, प्लायर्स यूज्ड बाय द इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क. ये भी वही क्वेश्चन है कि रबर कवर या प्लास्टिक वो बैड इंसुलेटर्स होते हैं और दैट इज वाई उनका यूज करना इम्पोर्टेंट होता है सो दैट इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे. देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 36, वो राइट द टू स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ डियर. तो डियर का अगर आप देखोगे तो उसके साइड में दो आंखें रहती हैं
so that they can see the predator, और उसको दिख जाए कि कोई उसका शिकार करने वाला है। और दूसरी बात, जो डियर की बॉडी होती है वो उस पे ऐसे डॉट्स होते हैं सो दैट कि डिटेक्ट ना हो जाए, कैमोफ्लेज हो जाए, और उसके ईयर्स बहुत शार्प होते हैं सो दैट दे अंडरस्टैंड और उनको वॉइस सुनाई दे जाए अगर कोई प्रेडेटर उनके पास आने वाला है तो। देन गिव टू अडेप्टिव फीचर्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, तो हाइड्रीला जैसे प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर वैक्स लगी होती है सो दैट वो पानी में बहुत देर तक टिक सकें, और वो लाइट वेट होते हैं पानी के अंदर, और उनकी जो रूट होती है वो काफी डीप होती हैं। तो ये कुछ अडेप्टिव फीचर्स हैं एक्वाटिक प्लांट्स के। देन व्हाट इज एक्लेमेटाइजेशन? एक्लेमेटाइजेशन इज द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और जिसके अंदर आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज करती है। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्लेमेटाइजेशन बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं फॉर adjusting to the environment. Then section E, question number 37. Observe the picture given in the figure carefully and answer the following questions. Maybe question जो figure है वो बहुत अच्छे से दिख नहीं रही है, but यहाँ पर एक policeman है जो उसने mask पहना हुआ है. So what is the covering the nose and mouth of the policeman? तो policeman यहाँ पर mask पहन के बैठा हुआ है. And why is he putting a cover on his nose? So वो इसलिए पहन के बैठा हुआ है ताकि वो अपने आप को डस्ट और स्मोक से बचा सके, क्योंकि एयर पोल्यूशन होती है, व्हीकल्स बहुत ज्यादा एमिट करते हैं एयर पोल्यूशन, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए वो ये पहनता है। देन क्वेश्चन नंबर 38 पैसेज दे दिया है मैम ने। टेक अ कॉम्ब इन योर राइट हैंड एंड ब्रिंग इट इन योर ईयर एंड लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर एंड यू कैन सी योर ओन फेस, दिस इज योर मिरर इमेज। अब ये मिरर इमेज में यू अपीयर टू बी होल्डिंग कॉम इन योर लेफ्ट हैंड, क्योंकि उल्टा दिखता है मिरर में हमेशा। हाउ इज मिरर इमेज डिफरेंट फ्रॉम द पिन होल कैमरा? पिन होल कैमरा की जो इमेज आती है वो इन्वर्टेड आती है, लेकिन मिरर इमेज जो होती है वो हमारी रियल इमेज होती है। एंड हाउ इमेजेस आर फॉर्म? तो इमेजेस आर फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो जैसे ही लाइट बाउंस बैक करती है विद द ओपेक ऑब्जेक्ट और मे बी the object in situation, so वो they it forms, वो ऐसी surface पे mirror पे वो एक और image बना देती है reflect करके, so that is called the image, that is how the image is formed. Then question number 39, read the passage carefully. The places where organism live is called habitat. Habitat means a dwelling place. A habitat provides food, water, air, shelter and other needs to organisms. Several kinds of plants and animals live in the same habitat. The plants and animals that live on land are said to be terrestrial habitats. Some examples are forest, grassland, desert, coastal, mountain regions. On the other hand, the habitats of plants, animals that live in water are called aquatic habitats. Lakes, rivers, oceans are some examples of, and there are various variations among the grasslands, desert, coastal, mountain region located in different part of the world. The organisms, both plants and animals living in an habitat, are its biotic components. The non-living things such as rocks, soil, air, water in the habitat constitutes its abiotic components. सो बेसिस दिस मैम ने क्वेश्चन दे रखे हैं कि व्हाट इज हैबिटेट, तो जैसे कि वहां पर लिखा था हैबिटेट इज अ ड्वेलिंग प्लेस, सो द आंसर इज हैबिटेट मींस ड्वेलिंग प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक हैबिटेट? तो एक्वाटिक नाम से पता चल रहा है वाटर हैबिटेट, तो लेक्स, ओशियन, तो बोथ 1 and 2 is the answer. What are the biotic and abiotic components of the habitat? तो इसमें आप पैराग्राफ से ही आंसर दे सकते हैं। बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, which includes living organism, plants and animals. Abiotic non-living thing, non-living components होते हैं जैसे rock, soil, etc. So these are already given in the paragraph. So I hope आपको ये useful लगी होगी. So please subscribe. Thank you.